Now students, we discuss about the values of trigonometric ratios for the angle theta equals to 225 degree. देखो स्टूडेंट 225 डिग्री कैसे फॉर्म होता है. कंसिडर अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल. स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल है जिसमें x एक्सिस y एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एट ओरिजिन O. O is the initial arm. O is the initial arm. O rotates about O in anti-clockwise direction and reaches 180 plus 45, and it reaches at the position OB such that measure angle AOB is equal to 225 degree. P of x comma y be any point on the circle. Length of OP is 1 unit because it is the radius of standard unit circle. OP is 1 unit. Now students, draw PM perpendicular on x axis. Draw PM perpendicular on y axis. Measure angle AOB is 225 degree. Draw PM perpendicular on y axis. Therefore, triangle OMP is a right angle triangle. OMP is a right angled triangle. Now, measure angle MOP is 45 degree. Measure angle PMO is 90 degree. Measure angle MPO or OPM is also 45 degree. By 45 90 rule. क्या है 45 90 रूल? देखो स्टूडेंट्स, लेंथ ऑफ अपोजिट P के कोऑर्डिनेट्स x, y. Length of A, this is x and this is y. Length of side opposite to 45 degree, that is PM is equal to x is equal to 1 by root 2 times hypotenuse. 45 90 का रूल ये है स्टूडेंट्स कि 45 डिग्री के अपोजिट साइड की जो लेंथ है वो 1 by root 2 टाइम्स हाइपोटेनियस होती है. 1 by root 2 टाइम्स हाइपो, 1 by root 2 टाइम्स हाइपो, एंड हाइपो इज 1. Therefore 1 by root 2. Length of OM is y, is also 1 by root 2 times OP, that is equals to 1 by root 2. x भी 1 by root 2 है, y भी 1 by root 2 है. Therefore students, sin 225 degree equals to, but point P of x comma y lies in थर्ड क्वाड्रेंट. पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट? थर्ड क्वाड्रेंट में है. Therefore x कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव होता है. y कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव होता है. ओके. Therefore sin 225 degree is equal to y minus 1 by root 2. Cos 225 degree is x minus 1 by root 2. Tan 225 degree y by x is 1. Now cosec 225 degree is 1 by y is minus root 2. Sec 225 degree is 1 by x is minus root 2, and cot 225 degree is x by y is again 1. This is about the trigonometric ratios for the angle theta equals to 225 degrees. एक्सरसाइज 2.1 हम डिस्कस कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री. जो एक्सरसाइज जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज of specific angles
एंड साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड को टर्मिनल एंगल्स के ऊपर डिपेंड है। नाउ फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। यहां तक तो हमने ऑलरेडी देखा है लास्ट लेक्चर में। 0 डिग्री के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें निकाले हैं, 30 डिग्री के भी निकाले हैं, 45 डिग्री के भी निकाले हैं, 60 डिग्री का भी निकाला है, 180 डिग्री का भी निकाला है। 210 डिग्री का 210 ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस 30 फॉर दिस एंगल here students, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री। We already discuss in last lecture, in last video. Okay students, now we discuss for next one. For the angle theta equals to 210 degree in a standard unit circle, O is the initial arm along positive x-axis. OA rotates about O in anticlockwise direction and reaches at the point OB such that major angle AOB is 210 degree. Now P is the point P of x comma y, be a point on a circle. Draw PM perpendicular on x-axis such that major angle MOP, मेजर एंगल MOP कितना हो गया? 180 प्लस 30 हो गया। मेजर एंगल OMP 90 डिग्री। मेजर एंगल MPO 60 डिग्री। ये 30 है, ये 90 है और ये 60 है। By 30, 60, 90, by 30, 60, 90 rule, इसमें OP की लेंथ, OP रेडियस है, उसकी लेंथ 1 है। तो 30 के अपोजिट साइड की लेंथ PM इक्वल्स टू, जो कि है Y, PM इक्वल्स टू Y, that is 1/2। OM is 60 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ है, that is √3/2। ओके, 30, 60, 90 का रूल है स्टूडेंट्स। 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ हाफ ऑफ हाइपोटेनस होती है और 60 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ OM जो कि x है, that is √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस। ओके, नाउ स्टूडेंट्स OM is x, OM क्या है? यहाँ पे x कोऑर्डिनेट है, but P of x comma y lies in third quadrant. Point P of x comma y lies in third quadrant. और आप सब जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। Therefore x equals to minus √3/2, y equals to minus 1/2. Now we define the trigonometric ratios. Therefore sin 210 degree equals to y equals to minus 1/2. Cos 210 degree equals to x equals to minus √3/2. Tan 210 degree equals to y by x equals to minus 1/2 upon minus √3/2, that is equals to 1/√3. Now next, cosec 210 degree equals to 1 by y equals to minus 2, sec 210 degree equals to
1 by x equals to minus 2 by root 3, and cot 210 degree equals to x upon y, that is root 3. This is about the trigonometric functions for the angle theta equals to 210 degrees. Students, we discussed the trigonometric ratios for the angle theta equals to minus 30. माइनस 30 डिग्री के लिए हम देखते हैं स्टूडेंट्स, minus 30 degree angle is negative, then the sense of rotation is clockwise direction. Sense of rotation कैसे रहेगा स्टूडेंट्स? clockwise direction में रहेगा. See here, standard unit circle, x axis and y axis mutually perpendicular at the origin O, which is the center of circle. O is the initial arm. OA rotates about O in clockwise direction and reaches at the point OB such that major angle AOB is minus 30 degrees. Major angle AOB is minus 30 degrees. Now, major angle AOB is minus 30 degree. Minus 30 degree. P of x comma y be any point on circle such that length of OP equals to 1. OP की लेंथ कितनी है स्टूडेंट? 1 है. तो ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस. Such that major angle OMP equals to 90 degree. Major angle MOP, major angle MOP is ये 30 है तो ये 60 होगा. Major angle MOP is 60 degree and major angle OPM is 30 degree. तो ये होगा 60, 30, 90 एंगल. 30, 60, 90 एंगल इन ट्रायंगल OMP by 30, 60, 90 by 30, 60, 90. Length of PM equals to x equals to 60 डिग्री के अपोजिट साइड का साइड है √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस OP, that is √3/2. Length of OM equals to y equals to 30 डिग्री के अपोजिट साइड की लेंथ 1/2 into OP, that is equals to 1/2. Now, theta lies in fourth quadrant. थीटा कौन से क्वाड्रेंट में स्टूडेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट में है. Therefore, x is positive and y is negative. By using ASTC rule, angle lies in first quadrant, all positive. Second quadrant, sin positive. Third quadrant, tan positive. Fourth quadrant, 4 cos positive. ASTC rule, फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है. Therefore, x equals to √3/2 and y equals to -1/2. As we know that x and y, then we define the trigonometric ratios for the angle theta equals to -30 degree. Sin of -30 degree equals to y equals to -1/2. Cos of -30 degree equals to x equals to √3/2. Tan of -30 degree equals to y by x -1/√3. Cosec -30 equals to 1 by y equals to -2. Sec of -30 equals to
1 by x equals to 2 by root 3 and cot of minus 30 x upon y is minus root 3. These are the trigonometric ratios for the angle theta equals to minus 30 degrees. Trigonometric ratios for the angle theta equals to minus 225 degrees. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज हम फाइंड आउट कर रहे हैं फॉर द एंगल थीटा इक्वल्स टू 225 डिग्रीज. ओके, 225 डिग्रीज कौन से क्वाड्रेंट में आएगा स्टूडेंट्स? यस, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा क्योंकि ये माइनस है, निगेटिव है. इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या होगा? क्लॉकवाइज आएगा. Consider a standard unit circle. X-axis and y-axis mutually perpendicular to each other at origin, and origin O is the center of circle. OA rotates about O in clockwise direction and reaches at the point 180 plus 45. That is minus 225 degrees. यहाँ पे sense of rotation clockwise है, तो फॉर्म होने वाला एंगल कौन सा होगा? नेगेटिव एंगल होगा. ओके, नाउ O is the initial arm, O is the terminal arm. Measure angle AOB equals to minus 225 degrees. Let P of x comma y be in a point on circle, be any point on the circle such that length of OP is equals to 1. Now draw BM perpendicular on x-axis. Draw BM perpendicular on x-axis. Draw BM perpendicular on x-axis such that measure angle OBM 90 degrees. Measure angle MOB, ये 45 है, ये भी 45 है और ये 90 है. Now OBM 90 डिग्री, OBM 45 डिग्री. Now OMB, measure angle OMB is 90 degrees and measure angle MBO is 45 degrees. By 45, 90 rule. By 45 degree 90 rule, OP की जो लेंथ है, ये O है, OB की लेंथ है, ओके, OB is 1. ये पॉइंट बी हमने यहाँ पे लिया. नाउ बी के कोऑर्डिनेट्स हम x, y कंसीडर करेंगे. बी के कोऑर्डिनेट्स x, y, बी पॉइंट हम सर्कल के ऊपर लिया. बी ऑफ x, y, बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल. बी के कोऑर्डिनेट्स x, y है. बाय 45 रूल 90 OB की लेंथ 1 है. नाउ BM इक्वल्स टू, BM है x, BM है equals to x equals to 1 by root 2 times hypotenuse, that is 1 by root. BM 1 by root 2 है and OM y equals to 1 by root 2 times hypotenuse, that is 1 by root 2. But B lies in second quadrant. But the point B lies in second quadrant. B lies in second quadrant. Second quadrant में x निगेटिव होता है और y क्या होता है? पॉजिटिव होता है. Therefore x equals to minus 1 by root 2 and y equals to plus 1 by root 2. Therefore the values of trigonometric functions are
but the values of trigonometric functions are sin minus 225 degree equals to y equals to 1 by root 2, cos of minus 225 degree equals to x equals to minus 1 by root 2, tan of minus 225 degree equals to y by x equals to minus 1, cosec of minus 225 degree equals to 1 by y is equal to root 2, sec of minus 225 degree equals to 1 by x equals to minus root 2, cot of minus 225 degree equals to x upon y equals to minus 1. These are the values of trigonometric functions for the standard angle minus 225 degrees. Now minus 240, minus 270, you have to try to solve yourself. We discuss about minus 315 degrees. See here, next one, for the angle theta equals to 315 degrees. 315 degree can be written as minus 270 minus 45. 315 can be written as minus 270 and minus 45. It becomes the 315 degrees. Consider a standard unit circle. X-axis and y-axis mutually perpendicular to each other. At O is the center of circle. Now OA rotates about O in anti-clockwise direction. After complete rotation, it reaches at the point OB. Measure angle AOB is equals to minus 315 degrees. Now, let P of x comma y point on circle such that OP equals to 1. Length of OP is 1. Draw PM perpendicular on x-axis. Draw PM perpendicular on x-axis such that triangle OMP is right angle triangle. Triangle OMP is right angle triangle. Now ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है एंड ये 90 डिग्री है. इन ट्रायंगल OMP by 45 degree, 45 degree, 90 degree. OM equals to 1 by root 2. OM equals to x equals to 1 by root 2. PM equals to y equals to 1 by root 2. As we know that x and values of x and y, then we have to calculate the trigonometric functions for the angle theta equals to 315 degree. Now sin of minus 315 equals to y. P lies in first quadrant. P lies in first quadrant. Therefore, x and y are positive. X and y are both positive. X and y both are positive. Now sin minus 315 degree equals to y equals to 1 by root 2. Cos of minus 315 degree equals to x equals to 1 by root 2. Tan of minus 315 degree equals to y by x equals to 1. Cosec of minus 315 degree equals to 1 by y root 2. Sec minus 315 degree equals to
1 by x root 2 and cot of minus 315 degree equals to x upon y is 1. This is for the trigonometric ratios for the angle theta equals to minus 315 degrees. This completes the solution for question number 1. State the signs of. हम सब जानते हैं the sign of trigonometric ratios depend upon the measure of theta. थीटा के मेजर पे डिपेंड होता है उस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का साइन. फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 330 डिग्रीज. नंबर 1 tan 380 degrees. Tan 380 degrees can be written as 270 minus 270 plus 110. Now 270 plus 110 और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 360 plus 20. 380 can be written as 360 plus 20. 360 plus 20. See here student, angle 360 plus 20 lies in first quadrant. As we know that in a standard unit circle, after one complete rotation, 360 plus 20, that is 380. It is in the first quadrant. Now in first quadrant, all trigonometric ratios are positive side. First quadrant में क्या होता है? All trigonometric ratios of positive side. In first quadrant, all trigonometric ratios have positive sign. Therefore, tan 380 degree have positive sign. Now number 2 है student, cot 230 degree. Cot 230 degree can be written as 180 plus 50. Now 180 plus 50 lies in third quadrant. Angle 230 degree lies in third quadrant. Angle 230 degree lies in third quadrant. In third quadrant, according to ASTC rule, tan and cot are positive. Tan and cot positive. Therefore, cot 230 degree have positive side. Now third है sec 468 degree. Number 3, sec 468 degree. Now 468 can be written as 360 plus 108 degrees. 90 plus. That is again very good. 360 plus 90 plus 88. 90 plus 18. 450 plus 18. Very nice. That is 450 plus 18. Now 468 degrees lies in second quadrant, and as we know that second quadrant में sin और cosec पॉजिटिव होते हैं. In second quadrant sin and cosec have positive. Sin and cosec have positive sign. Therefore, sec 468 degree have negative sign. 468 degree
have negative sign. Now we try to solve question number 5, students. State the quadrant in which theta lies. As we know that the sign of trigonometric functions are different in a particular quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव होता है. सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव. फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव. तो स्टूडेंट यहाँ पे जो सॉल्यूशन है, इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो है sin थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0. Sure student, sin थीटा इज नेगेटिव. लेस देन 0 में sin थीटा क्या है, नेगेटिव. एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 है, मींस tan थीटा क्या है, पॉजिटिव. तो किस क्वाड्रेंट में इसका थीटा होगा? इट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. कौन से क्वाड्रेंट में होगा थीटा? थर्ड क्वाड्रेंट में होगा. थर्ड क्वाड्रेंट में sin क्या होता है, नेगेटिव. tan क्या होता है, पॉजिटिव. हेंस थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट. सेकंड भी सेम होगा. Now second one, cos theta less than 0 and tan theta greater than 0. Yes, it is also lying in third quadrant. Cos theta is negative. Therefore, cos theta less than 0 means cos theta is negative. And tan theta greater than 0 means tan theta is positive. Therefore, theta lies in cos theta नेगेटिव है, tan theta पॉजिटिव है, theta lies in third quadrant. Theta lies in third quadrant.